Welcome to the online platform of Coachify. And now let's start the discussion of today's newspaper, which is dated 8th of January. So, जो सबसे पहली न्यूज़ है, that is Jammu and Kashmir to have no local body members from tomorrow. That means कि जम्मू कश्मीर में जो आपकी पंचायती सिस्टम है वो लास्ट टाइम इलेक्ट हुआ था 2018 में, और अब उस असेंबली का टेन्योर ख़त्म हो रहा है this year on the 10th of January. So from 10th January 2019 to 2024, the tenure was for the 5 years. अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती सिस्टम नहीं रहेगी फॉर अ टाइम बीइंग, बिकॉज वहाँ पर आपके जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया देयर इज सपोज टू बी अ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज. तो जब तक वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं हो जाती है, कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक वहाँ पर पंचायती सिस्टम नहीं रहेगा. इन द स्टैटिक पार्ट, इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे यू आर हैविंग 3 लेवल्स. फर्स्ट इज़ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और ईच स्टेट गवर्नमेंट इज़ हैविंग पंचायती सिस्टम. ठीक है, तो ये जो पंचायती सिस्टम होता है दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही पंचायती सिस्टम वापस आएगा. सो यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है दैट इज़ कि व्हाट इज़ डिलिमिटेशन. सो इन द नॉर्मल वर्ड्स, डिलिमिटेशन का मतलब होता है आपकी जो असेंबलीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़ हैं, उनको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, रीफ्रेम किया जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन literally means any process or act of fixing limits or boundaries of the territorial constituencies. So इसमें delimitation का मतलब हो गया जो territorial constituencies हैं उनको rearrange किया जाएगा, and this process is done by a delimitation commission जिसको हम boundary commission भी कहते हैं. ठीक है, इसके ज़्यादा और deeper level पे नहीं जाना है कि कितने delimitation commissions बने हैं and all that. For time being दिस मच इज़ इनफ कि जम्मू कश्मीर में पंचायती सिस्टम जो है वो 10th जनवरी को ख़त्म हो रहा है, एंड नेक्स्ट पंचायती सिस्टम विल कम आफ्टर डिलिमिटेशन विच इज़ गोइंग टू बी डन बाय अ डिलिमिटेशन कमीशन फॉर फिक्सिंग और रीअरेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड न्यूज़. कल आई थिंक कल परसों के पेपर में न्यूज़ आई थी दैट बांग्लादेश में फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं. सो अभी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं. जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की शेख हसीना, वही अब वापस से कंटिन्यू करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर, एंड शी हैज़ रिसीव्ड मोर देन अराउंड 200 सीट्स. और कहीं पर भी सरकार बनाने के लिए नॉर्मली वी नीड मोर देन 50%. सो शी रिसीव 200 सीट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ she won her seat 8th time since 1986, and she won from the Gopalganj 3, and she is ruling the Bangladesh since 2009. Since 2009 she is ruling, and it's a record 4th consecutive term. ठीक है, एंड जो बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम 2-3 बार आ चुका है, दैट इज़ काजी हबीबुल अवल. तो आपने नाम ध्यान रखना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बेसिक्स ऑफ बांग्लादेश, दैट इज़ वेयर इज़ बांग्लादेश लोकेटेड, कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स हैं जिनकी बांग्लादेश से बॉर्डर लगती है, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, द वाटर बॉडी, देन बांग्लादेश ओपन्स अप टू द बेसिक्स ऑफ बांग्लादेश, दैट्स इट. ठीक है, सो इट्स एन इंटरनेशनल न्यूज़ कि आपके जो एक पड़ोसी नेशन है उसमें अभी नई सरकार बनी है. सो जो नई सरकार बनी है उसके हिसाब से कौन आपके नया प्राइम मिनिस्टर बना है, एंड द नंबर ऑफ सीट्स दे हैव वॉन, एंड उनके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका अपना नाम ध्यान रखना है. दैट्स इट. इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ ऑन द पेज नंबर 10, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज़ द रोहिंग्या कैंप्स विच आर गटेड इन द वाइड स्प्रिंट फायर. आपकी एक लोकेशन मेंशन है इसमें, कॉक्स बाज़ार. बांग्लादेश में एक एरिया है कॉक्स बाज़ार जहाँ पे बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ रहते हैं. वहाँ पे एक जो है वो फायर कॉट अप हो गई है. सो इस केस में द बेसिक्स ऑफ रोहिंग्या, दैट हुआ रोहिंग्या कौन से नेशन से वो बिलोंग करते हैं, एंड वो बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं. द थिंग इज़ दैट दे आर रिफ्यूजी, सो दे टुक रिफ्यूज इन बांग्लादेश. सो इससे 2-3 दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रीलंका. उस केस में भी रोहिंग्यास का नाम मेंशन था.
So why were they in the Sri Lanka also? So basically, Rohingyas are refugees बेसिकली फ्रॉम म्यांमार, और वहाँ से उनको जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, और उस बेसिस पर दे आर गोइंग टू द नियर बाई नेशंस विच इंक्लूड्स म्यांमार से तो खैर वो बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश है, इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, नियर बाय जितने भी नेशंस हैं आपके वहाँ पे वो पहुँच गए हैं. सो अभी जो न्यूज़ आई है कॉक्स बाज़ार की, that Cox's Bazar area is in Bangladesh. This is the area जहाँ पे they are, and the Rohingyas mainly belong to the Arakhine state, और जो Cox's Bazar है that is in Chittagong area of Bangladesh. उसके बाद जो next news है that is rise in child marriage in West Bengal. अभी एक रिपोर्ट आई थी, पेपर आया था Lancet Publications का, and that was titled Prevalence of Girl and Boy Child Marriage Across States and Union Territories in India from 1993 to 2021. And according to it, 1 in every 5 girls are still married below the legal age in India. And India में women की जो legal age है, that is 18 years. So according to the report, 1 in every 5 girls are still married below the age of 18. Apart from that, there has been an overall decrease in the child marriage, but there are some states जहाँ पर अभी भी child marriage prevalent है, and that includes Bihar, West Bengal, UP, and Maharashtra account for more than half of the total headcount burden of child marriage in girls. This includes UP, Bihar, West Bengal and Maharashtra. These are the 4 states. तो आपने इन states के नाम याद रखने हैं. जो पेपर रिसर्च पेपर आया है उस रिसर्च पेपर का टाइटल आपने याद रखना है. That's it. Your next news है that is about All India Conference of Director Generals and Inspector Generals of Police in Jaipur. And this is the 58th meeting. ठीक है, और ये 3 दिन के लिए ये मीटिंग होगी from 5th to 7th January. And this meeting has been conducted by, this event has been organized by Intelligence Bureau. So ये न्यूज़ रिपीट हो गई है. एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन ये है इसमें कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, this conference has been organized by Intelligence Bureau. That's it. Okay, next news is with flexible courses, IITs open doors for the students studying in far-flung areas of India. ठीक है, यानी अभी जो 5 IITs हैं, they are tying up with NSDC, that is National Skill Development Corporation, and with the tie-up, they are providing short-term courses. And right, so these are the 5 IITs: IIT Ropar, Guwahati, Mandi, Patna and Kanpur. These 5 IITs जो हैं वो आपका जो academic year 24-25 के लिए they are providing IIT tags for through a minor specialization, diploma, bachelor's or master's degree in collaboration with National Skill Development Corporation. Also, they can pursue a short-term skill development course through Pradhan Mantri Kaushal Vikas schemes or through ITIs. और ये जितना भी पूरा प्रोसेस रहेगा, जितने भी स्किल्स वगैरह रहेंगी, these will be facilitated through Skill India digital platform. The basic thing is that some 5 IITs in collaboration with National Skill Development Corporation are providing courses. ठीक है, अब यहाँ पे जो नई स्कीम आई है that is प्रधानमंत्री कौशल विकास. So let's go for it. This is your प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. It's a flagship scheme of Ministry of Skill Development. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and the scheme is implemented by National Skill Development Corporation. इसी के साथ आपके जो IITs हैं they are collaborating. और ये जो स्कीम है और ये जो कॉर्पोरेशन, इनका मेन टारगेट रहता है स्किल सर्टिफिकेशन लेना, यानी बेसिक स्किल्स देना with the help of which better livelihood can be secured. So अभी तक आपके पास एक स्कीम आई थी that was MG Narega. Now this is the second scheme. So the first scheme in the very first week of January was MG Narega, or in the beginning of second week we are having another scheme that is named प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ठीक है, ओके. रोहिंग्या कैंप्स बांग्लादेश, जिसमें भी आपके फायर ब्रेकआउट हो गया था, दिस न्यूज़ हैज़ बीन डन. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है
Israeli army wraps up major combat in the northern Gaza. Israel Palestine का जो issue है, जो आपके war है, that started on October 7th when the Hamas group that belongs to Palestine attacked on the southern Israel. ठीक है, यानी 7 अक्टूबर से आपकी ये वॉर स्टार्ट हुई थी और अभी भी आपके कंटिन्यूएशन में है. और रिसेंटली आपके जो इसराइल है, अकॉर्डिंग टू देम दे हैव रैप्ड अप द कॉम्बैट इन द नदर्न गाजा, और आपके जो हमास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स है नदर्न गाजा में, उनको उन्होंने डिसमेंटल कर दिया है. सो दिस इज़ द एरिया एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ गाजा. ये जो पोर्शन है नदर्न गाजा, यहाँ पर आपका जो हमास के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसको डिसमेंटल किया गया है. द सेकेंड न्यूज़ इज साउथ कोरिया accuses नॉर्थ कोरिया फायरिंग shells for the third day. So जो नॉर्थ कोरिया कंट्री है, according to South Korea, the North Korea is firing artillery shells near the sea boundary for a third straight day. So यहाँ पे it's not अभी इतनी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं बन रही है. So आपको basics of North Korea and South Korea, that they where are they located. So on the eastern side of China, North Korea and South Korea is there. ठीक है. So mainly it's a Korean peninsula. इसके डिवीजन के बाद सदर्न पेनिनसुला is called as South Korea and the northern portion is called as the North Korea. इनके साइड में एक तरफ है आपके Sea of Japan, एक तरफ आपके Sea of Japan, then that side they are having Yellow Sea, and on the bottom side they are having East China Sea. And in terms of states, on the eastern side they are having Japan, and on the other side they are having Russia, and this side they are having China. Okay, after that, the last news of 8th January is IIT Delhi team makes first high-resolution landslide risk map for India, and the name is the Indian Landslide Susceptibility Map. It's a first of its kind. Normally, आपके landslides का मतलब होता है a portion of land slides down from the hilly areas or from the slopey areas. Okay, normally it happens in the hilly regions. Especially after the rainfall or mainly after earthquake. जब भी आपके land में disturbance आता है because of the earthquake, या the land becomes wet because of the rainfalls, वो अपना place छोड़ देती है, यानी that gets displaced. And with the displacement, जो the portion of land slides down the slope. So that is normally a landslide, but इसको इतना we can say that it's limited to lesser areas of the country, इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है. ओके, सो जब आप इस मैप की बात करेंगे, द मेन पोर्शंस दैट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स आर फुटहिल्स ऑफ हिमालय, द असम मेघालय रीजन and the western Ghats and some parts of eastern Ghats. If you go for India's map, this is the Himalayan region, this is Assam Meghalaya, the area of Assam Meghalaya region, this portion is your western Ghats, and this portion is your eastern Ghats, this Himalaya, this is Assam Meghalaya region. These areas are landslide prone according to a map prepared by IIT Delhi. So it's the very first high resolution landslide map. This term has to be remembered. This is a high resolution landslide map. Okay, so I think this is it for today's newspaper. Thank you.